Jai Hind, dear students of class 10th. Today I am continuing the topic food security. I have discussed yesterday about the term food security. What is food security? Actually, food security, food security ensuring that all the people at all time have both physical and economic access to a reliable and nutritionally adequate supply of food. It is called food security. फूड सिक्योरिटी माने होता है खाद्यान्न की उपलब्धता और उसकी सुरक्षा। लोगों को खाद्यान्न की सुरक्षा का उपाय किया जाए, जिससे इंडिया में एफसीआई के थ्रू व्हीट राइस का प्रोक्योरमेंट किया जाता है ताकि लोगों को हमेशा फूड उपलब्ध रहे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? फूड सिक्योरिटी मीन्स फर्स्ट, इट इन्वॉल्व्स फिजिकल अवेलेबिलिटी ऑफ फूड to entire population of a country. Each and every individual of the country should have access to the food. Second, people have enough purchasing power to so that they can acquire the food they need. And people should have also purchasing power. If we don't have money, how we can purchase the food? It should also be included in the part that people need to have purchasing power. And third, for healthy life, food availability should be adequate in quantity as well as quality to meet the nutritional requirement. So there are two basic aspects of food security we have to discuss. As I have told you yesterday, it consists of two components: buffer stock and the public distribution system. But do you know, food security is having another aspect also: individual, that is below poverty line, upper poverty line, and second, national, maintaining buffer stock. So here we are going to discuss both the two, buffer stock and public distribution system, PDS. Causes of food insecurity. Do you know why there is some regions? What are some regions which are behind the food insecurity? We'll discuss later. First, I am going to discuss about the fact that, as you know, that PDS is a program which provides food grains and other essential commodities at subsidized prices in rural and urban areas. गांव में देखे हो राशन की दुकान होती है, कम रेट पे 2 या 3 रुपया रेट पे गेहूं और चावल ये सब उपलब्ध कराया जाता है। खास करके दो तरह के कार्ड होते हैं, एपीएल अपर पावर्टी लाइन, बीपीएल बिलो पावर्टी लाइन। गरीब लोगों को और भी सस्ता दिया जाता है। बहुत सारे राज्य में तो 30 पैसे किलो चावल मिलता है, जैसे तमिलनाडु। India's food security policy has primarily objective to ensure availability of food grains to common people at affordable price. अफोर्डेबल प्राइस पे हर कॉमन पीपल को, हर एक साधारण व्यक्ति को खाना मिलता रहे। इट हैज enabled the poor to have access to food. This focus of the policy is on growth in agriculture production and on fixing the support price for production of wheat and rice to maintain their stock. Food Corporation of India, FCI. There are two FCI. Fertilizer Corporation of India, that is another. Here we are talking about Food Corporation of India, FCI, which is responsible for procuring and stocking food grains, whereas distribution is ensured by public distribution system. फूड ग्रेन का इकट्ठा खरीदना, उसको रखना गोदाम में भर के, किसका काम है? एफसीआई का। और उसका डिस्ट्रीब्यूशन का काम कौन करता है? पीडीएस। The FCI procures food grains from the farmers at the government announced minimum support price. गवर्नमेंट फार्मर्स को एक मिनिमम, एक न्यूनतम लागत, जैसे चावल है, चावल की खेती हो गई, चावल का एक मिनिमम 2000 रुपए क्विंटल रेट रख दिया गवर्नमेंट ने, उसके हिसाब से खरीदती है उसको और उसको जमा करती है। द गवर्नमेंट यूज द प्रोवाइड subsidies on agricultural inputs such as fertilizer, power and water. These subsidies have now reached unsustainable level and have led to large scale inefficiencies in the use of the scarce inputs. Excessive and imprudent use of fertilizers and water has led waterlogging,
salinity and depletion of essential micronutrients in the soil. बहुत ज्यादा सब्सिडी की वजह से खाद का इस्तेमाल भी बढ़ा है, इसकी वजह से मिट्टी की क्वालिटी में भी अंतर आ रहा है. द हाई एमएसपी minimum support price subsidies input and committed FCI purchases have distorted the cropping pattern. Wheat and paddy crops are being grown more than for MSP as they get. Punjab and Haryana are foremost examples. This has also created a serious imbalance in intercrop parities. Do you know? एमएसपी के थ्रू बहुत ज्यादा जब पैसा मिलने लगा धान और गेहूं के लिए, तो बहुत सारे फार्मर्स इसी की खेती करने लगे, बहुत सारे अदर क्रॉप्स इग्नोर होने लगे और इसके वजह से बहुत ज्यादा सब्सिडी भी मिल रहा है. उसके वजह से पानी का भी बहुत यूज कर रहे हैं, इरिगेशन का. इवन पंजाब और हरियाणा में ड्राई एरिया कंडीशन में भी राइस कल्टीवेशन हो रहा है. यू ऑलरेडी नो दैट द कंज्यूमर्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज. Consumers are divided into two categories: below poverty line (BPL) and above poverty line (APL). With the issue price being different for each category. PDS के में दोनों ही कैटेगरी के लिए अलग-अलग रेट रखा हुआ रहता है. However, this categorization is not perfect, and a number of deserving poor have been excluded from BPL category. वास्तव में जो BPL है उनको ये फैसिलिटी ना लेके जो बीच मिडिल मैन है, स्पेक्टेकुलर है, ये लोग मिलजुल के उनका अनाज उठा लेते हैं और मार्केट में बेच देते हैं. Moreover, some of so-called APL slip back to BPL because of the failure of even one crop, and it is administratively difficulty to accommodate such shift. Each district and block can be made self-sufficient in food grain production if government provides प्रॉपर एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर. अगर गवर्नमेंट कायदे से हर एक रीजन को इक्वली एग्रीकल्चरल इनपुट्स प्रोवाइड करे तो हर जगह प्रोडक्शन अच्छा हो सकता है. क्रेडिट लिंकेज बनाना होगा एंड ऑल्सो इंकरेज द यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज एंड टेक्निक्स. इसीलिए आजकल जगह जगह कॉल सेंटर्स खुल रहे हैं किसानों के हेल्प के लिए. किसानों के लिए मेला लगाया जा रहा है, साइंटिस्ट वहां जाके उनको मॉडर्न टेक्निक सिखाते हैं. Instead of concentrating only on rice or wheat, the food crops with a better growth potential in that particular area must be encouraged. Creation of necessary infrastructure like irrigation, availability of electricity may also attract private investment in agriculture. Nowadays, many private industries, they are investing a lot of money in agriculture for better production, for cash crop especially. The focus on increasing food grain production, which should be on sustainable basis. Agriculture should be sustainable. It should not be for few years. Agriculture should be developed in the way that it can meet the demand of our future generation regularly. So it should be on the basis of sustainable basis. Also, free trade in grains will create massive employment and reduce poverty in the rural areas. अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का अच्छे से बढ़ावा दिया जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्र में फूड, खास करके छोटे मार्जिनल फार्मर्स का इनकम सप्लीमेंट होगा, बढ़ेगा. There has been a gradual shift from cultivation of food crops to cultivation of fruits, vegetables, oilseed and industrial crops. आजकल धीरे धीरे फूड क्रॉप से लोग किधर की तरफ बढ़ रहे हैं? कैश क्रॉप की तरफ, ताकि ज्यादा फायदा हो. This has led to the production in net sown area under cereals and pulses. With the growing population of India, the declining food production puts a big question mark over the country's future food security. अगर इंडिया में सब लोग कैश क्रॉप की तरफ शिफ्ट करेंगे तो इंडिया में इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ आबादी है, इतने लोगों के लिए फूड की क्राइसिस होगी तो कोई भी विश्व में ऐसा कंट्री है नहीं जो कि इतना फूड सप्लाई इंडिया को कर पाए. The competition for land between non-agricultural uses and housing and agriculture has resulted. Productivity of land has started showing a declining trend. Fertilizer, pesticide and insecticides which once showed dramatic result now are being held responsible for declining the soils. एक समय जब फर्टिलाइजर का इस्तेमाल शुरू हुआ, पेस्टिसाइड यूज करना शुरू किए, ऑल ऑफ सडन क्रॉप प्रोडक्शन बहुत तेजी से बढ़ा,
लेकिन अब स्टेगनेंट है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब प्रोडक्शन कम हो रहा है, इसीलिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है. डू यू नो सिक्किम इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया हैविंग 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग. Periodic scarcity of water has led to reduction in area of under irrigation. पानी की कमी, इरिगेशन की पानी की कमी जब होगी, इरिगेशन की सुविधा की कमी होगी तो भी प्रोडक्शन सफिशिएंट नहीं होगा. Inefficient water management has also led water logging and salinity in the soil also. One important reason is land degradation. Free power of section of farmers has encouraged them pump groundwater to grow water intensive crops in low rainfall areas, as in case of Punjab and Haryana. I told you, with the canal water and tube well water they are growing paddy crop, rice crop. That is not good. This unsustainable pumping that has resulted water shortage in aquifers. धीरे धीरे ग्राउंड वाटर टेबल कम हो रहा है. Many wells and tube wells have dried up completely and has pushed marginal and small farmers out of cultivation. और इसके वजह से छोटे फार्मर उनको कल्टीवेशन करने में दिक्कत भी हो रही है. The big farmers with deeper tube well still have ample water, but many others face water crisis. Adequate shortage and marketing facilities also act as disincentive to the farmer. Thus, the farmers are badly affected by uncertainties of production and market. They suffer from double disadvantage as they have high prices for input. जो खेती में लगाने वाले संसाधन हैं उसको महंगा दामों पे खरीदना पड़ता है, जैसे HYB सीड, फर्टिलाइजर एटसेट्रा, और लैक ऑफ बार्गेनिंग पावर बिकॉज ऑफ फिक्स प्राइस इन देयर फेवर. और बेचने के समय उनको पर्याप्त उचित मूल्य नहीं मिलता. All the production reaches the market simultaneously. This higher as supply, the lower is demand. This causes distress scale also. The next topic we are going to discuss is the impact of globalization on agriculture. Globalization means making the world as a village due to the fast connectivity through the internet. Globalization is not a new phenomenon. It was there at the time of colonization. In the 19th century, when European traders came to India, and that time too, Indian spices were exported to different parts of the world. Till today, it is one of the important items of export from India, spices. गरम मसाला भारत का बहुत फेमस है पूरे वर्ल्ड में. During the British period, cotton belts of India attracted the British, and ultimately cotton was exported to Britain as raw material for textile industries, where in Manchester, Liverpool, where the industry was flourished, as once Manchester was the biggest cotton textile producing center. Not today. So far, you have read about the Champaran movement, which started in 1917 in Bihar. This was started because farmers of that region were forced to grow indigo on their land because it was necessary for the textile industries which were located in Britain. Farmers को जबरदस्ती कहा जाता था नील की खेती करो, इंडिगो माने नील, जबकि फार्मर चाहते थे कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन करें, पर ऐसा होता नहीं था. Under globalization, particularly after 1990s, the farmers in India have been exposed to new challenges. Despite being an important producers of rice, cotton, rubber, tea, coffee, jute, and spices, our agricultural products are not able to compete with the developed countries because highly subsidized agriculture in those countries. जो विश्व के विकसित देश हैं वहां ऑर्गेनिक फार्मिंग का बढ़ावा है, वहां के प्रोडक्ट से हमारे देश के प्रोडक्ट compete नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है. Can you name any gene modified seed used vastly in India? Yes, of course. आलू से लेके कपास तक हर चीज के लिए तो जीन मॉडिफाइड HYB सीड्स यूज कर रहे हैं हम लोग. इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज मच मोर vogue because it is practiced without factory paid
chemicals such as fertilizer and pesticide. Hence, it does not affect environment in a negative manner. Today, Indian agriculture finds itself at the crossroad. To make the agriculture successful and profitable, it is important to do organic farming. A few economics think that Indian farmers have bleak future if they continue growing food grains on holdings that grow smaller and smaller as the population rises. India's rural population is about 600 million, which is depends upon 250 million approximate hectares of agricultural land, an average of less than half of a hectare per person. पहले बोला जाता था हेड्स पर एकड़, एकर्स पर हेड, कॉन्सेप्ट चेंज हो गया. पहले बोलते थे एकर्स पर हेड. हमारे पास 10 एकड़ जमीन है, अब क्या हो गया है हेड्स पर एकड़. 1 एकड़ जमीन में कितने लोग हैं? Indian farmers show diversity their cropping pattern from cereals to high value crops. This will increase income and reduce environmental degradation simultaneously, because fruits, medicinal herbs, flowers, vegetables, biodiesels, crops like jatropha is a plant. We obtain biodiesel from that. Jojoba need much less irrigation than rice and sugarcane. So in dry land areas where sugarcane is difficult to grow, like in Maharashtra, there another crop can be grown. So according to the ecological aspect, we need to grow the crops to compete our agriculture with the world market. Few of the important thing as not given in your book, but I want to discuss very fast. Causes of food insecurity. फूड इनसिक्योरिटी कब होता है? एज इफेक्ट ऑफ नेचुरल कैलामिटीज. अगर बार बार कोई प्राकृतिक आपदा है, क्रॉप फेलियर हो, शिफ्ट ऑफ कल्टीवेशन फ्रॉम फूड टू कैश क्रॉप. अभी हमने बताया फार्मर्स अब फूड क्रॉप की जगह कैश क्रॉप का खेती ज्यादा कर रहे हैं. नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज ऑफ लैंड बढ़ रहा है जगह जगह, खास करके एलुवियल सॉइल जोन में जो कि सबसे प्रोडक्टिव मिट्टी है, वहां पे फार्मर्स की जमीन को खरीद के बिल्डर्स वहां बिल्डिंग बना रहे हैं. डिक्लाइन इन प्रोडक्शन, खास करके पंजाब में प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन का कम हो रहा है. इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट इंडिया में अभी अच्छा नहीं है. इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट, अनसर्टेनिटी ऑफ प्रोडक्शन एंड मार्केट, लैक ऑफ डोमेस्टिक एटसेट्रा. All these are the factors. Because of that, there is food causes. These are the can be called as causes of food insecurity. So, in this perspective, the last concluding thing is here. We have to discuss change in cropping pattern. For example, from cereals to high value crops will mean that India will have to import food. अगर हम लोग फूड क्रॉप को छोड़ के कैश क्रॉप ही ज्यादा उगाएंगे तो हम लोग को फूड क्रॉप इंपोर्ट करना पड़ेगा. ड्यूरिंग 1960s दिस वुड हैव बीन सीन एज अ डिजास्टर. भारत को विश्व से गेहूं खरीदना पड़ा था और काफी इसके लिए जलील भी होना पड़ा था. बट इन इंडिया इंपोर्ट सीरियल्स व्हाइल एक्सपोर्टिंग हाई वैल्यू कमोडिटीज. इट विल बी फॉलोइंग सक्सेसफुल इकोनॉमीज लाइक इटली एंड इजराइल एंड चिली. These countries export products like olives, fruits, especially seeds, wine, etc., and import cereals. Are we ready to take this risk? क्या हम लोग ये रिस्क लेने को तैयार हैं कि कैश क्रॉप की पैदावार ज्यादा करें, उसको बेचें और फूड क्रॉप इंपोर्ट करें? नो. आई थिंक in case like India, where population is more than 135 crore, about 140 crore, we can't take this risk. So lesson is finished, and I hope you have understood and enjoyed the lesson today. I will send you notes. It will contain all the important part which are needed for your preparation of board examination. So thank you. Have a nice day.